નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો ગુજરાત ફર્સ્ટ. આપની સાથે હું નવીન દાફડા. સમાચારો પર નજર કરીએ તો પીએમ મોદીએ 24 કલાકમાં બીજી વાર દેશવાસીઓને અપીલ કરી છે. ગુજરાતની ધરતી પરથી દેશવાસીઓને પીએમ મોદીએ અપીલ કરી છે કે પેટ્રોલ ડીઝલનો ઉપયોગ ઓછો કરવો. દુનિયા અસ્થિર પરિસ્થિતિઓથી પસાર થઈ રહી છે. કોરોના અને હવે યુદ્ધની અસર દુનિયા પર પડી છે. ભારત વસ્તુઓ મંગાવવા લાખો કરોડોની વિદેશી મુદ્રા ખર્ચ કરે છે. સપ્લાય ચેન પણ હાલ અસ્થિર થઈ ગઈ છે તેવું પણ પીએમ મોદીએ કહ્યું છે. पहले के दशकों में भी जब जब देश युद्ध या किसी और अन्य बड़े संकट से गुजरा है, सरकार की अपील और उस अपील पर हर नागरिक ने ऐसे ही अपना दायित्व निभाया है. आज भी जरूरत है कि हम सब मिलकर अपना दायित्व निभाएं. देश के संसाधनों पर पड़ने वाले बोझ को कम करें. आप भी जानते हैं कि भारत कितने ही उत्पादों को मंगाने के लिए लाखों करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा खर्च करता है. इसी समय विदेश से आने वाले उत्पादों की कीमतें भी आसमान छू रही है और सप्लाई चेन भी पूरी तरह तहस नहस हो चुकी है. और इसलिए देश पर यह दोहरा संकट है. जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही हमें हर छोटे बड़े प्रयास से ऐसे उत्पादों का उपयोग कम करना है जो विदेश से आते हैं, और ऐसे व्यक्तिगत कामों से भी बचना है जिसमें विदेशी मुद्रा खर्च होती है. साथियों, भारत के इंपोर्ट का बहुत बड़ा हिस्सा क्रूड ऑयल है, और दुर्भाग्य से जिस क्षेत्र से दुनिया के बड़े हिस्से को तेल मिलता है, आज वही क्षेत्र संघर्ष और युद्ध की स्थिति में उलझा हुआ. और इसलिए जब तक हालात सामान्य नहीं होते, हम सबको मिलकर छोटे छोटे संकल्प लेने होंगे. मैंने कल कर्नाटका और तेलंगाना में भी इस बारे में चर्चा की है. मैं आज गुजरात में भी अपने आग्रहों पर फिर से जोर दे रहा हूं, और आप पर तो मेरा ज्यादा हक है, इसलिए जरा हक से कहने वाला. मेरी देश के हर नागरिक से अपील है, जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें. मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें. कार पुलिंग को बढ़ावा दें. जिनके पास कार है वे एक गाड़ी में ज्यादा लोगों को साथ लेकर चले. जिनके पास ईवी है वे भी दूसरों की मदद के लिए आगे आए. साथियों, डिजिटल टेक्नोलॉजी ने अब इतना कुछ आसान बना दिया है. टेक्नोलॉजी की मदद भी हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगी. ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग्स और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए. मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें. साथियों, सिर्फ ईंधन ही नहीं,
खाने के तेल पर भी देश की बड़ी विदेशी मुद्रा खर्च होती है। अगर हम थोड़ा संयम बरतें, तेल की खपत कम करें, खाने के तेल की, तो इससे देश और हमारी सेहत दोनों को लाभ होगा। और सूरत वालों को मैं खास कहता हूं, इसी तरह मैं आज समाज के सभी भाई बहनों से, मैं आपके परिवार का सदस्य हूं इसलिए आग्रह से कहता हूं, और इसमें तो आपको आगे आकर के मेरी मदद करनी पड़ेगी। सोने की आयात पर भी देश का बहुत बड़ा पैसा विदेश जाता है। मैं आप सबसे, देशवासियों से आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें। गोल्ड की जरूरत नहीं है। साथियों, आज समय की मांग है कि हम वोकल फॉर लोकल को एक जन आंदोलन बनाएं। विदेशी सामान की जगह लोकल उत्पादों को अपनाएं। अपने गांव, अपने शहर, अपने देश के उद्यमियों को हम ताकत दें। यहां लोग बैठे हैं, बहुत अच्छी चीजें बनाते हैं, શ્રેષ્ઠ ચીજો का उत्पादन करते हैं। તો સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીના પરિણામને લઈ વડાપ્રધાન મોદીએ નિવેદન કર્યું છે। વડોદરામાં પીએમ મોદીએ ગુજરાતીઓનો આભાર માન્યો। તેઓએ કહ્યું કે સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીમાં શાનદાર જીત થઈ અને ગુજરાતીઓને વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ આભાર માન્યો છે। तो एक और बात की खुशी है, बंगाल, असम और पुडुचेरी के नतीजों ने पूरे देश में ही उत्साह का माहौल बना दिया है। और उसके साथ साथ आप सबने भी मिलकर एक इतिहास बनाया है। गुजरात निकाय और पंचायत चुनावों के परिणाम भी बहुत शानदार रहे और इसकी भी चर्चा पूरे देश में हो रही है। साथियों, गुजरात के लोगों ने हमेशा राजनीतिक स्थिरता को महत्व दिया है। ये यहां के लोगों की राजनीतिक दूरदर्शिता है। वो जानते हैं कि राजनीतिक स्थिरता का महात्म्य क्या होता है और जहां राजनीतिक स्थिरता होती है वहां अर्थव्यवस्था की गति और तेज हो जाती है। તો વિદેશમાં લગ્ન યોજતા લોકોને પણ પીએમ મોદીએ અપીલ કરી છે। ભારતમાં જ લગ્નનું આયોજન કરવા પણ અપીલ કરી। લગ્ન માટે પણ ભારતની જમીન કરતા પવિત્ર સ્થળ કોઈ નથી। ગુજરાતમાં સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી ખાતે સરસ લગ્નનું આયોજન થઈ શકે। સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીમાં પણ શાનદાર વ્યવસ્થા ઊભી કરી છે। ગુજરાતમાં પણ એકથી વધીને એક સ્થળો છે। પોતાના બાળકને સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી જરૂર બતાવો તેવી અપીલ પીએમ મોદી દ્વારા અહીં કરવામાં આવી છે। साथियों, एक और भी अहम विषय, और वो भी आप में से बहुतों को लागू होता है, बुरा मत मानना, फैशन हो गई है। जैसे ही वैकेशन हुआ, बच्चों के हाथ में विदेश की टिकट पकड़ा देते हैं। विदेश में जाके वैकेशन कर रहे हैं। गर्मी की छुट्टियां आ रही हैं। आजकल विदेश घूमने
वहां पर डेस्टिनेशन वेडिंग, ये मैं यहां से बहुत से लोग हैं, आप मुझे निमंत्रण नहीं भेजते हैं, पहले भेजते थे क्योंकि विदेश में ही शादी करते थे, अब बंद कर रहे हैं। ये विदेश में वेडिंग इनका फैशन खूब बढ़ रहा है, और लेकिन इस पर भी बहुत विदेशी मुद्रा खर्च होती है। साथियों, आप सोचिए, क्या भारत में ऐसी जगह नहीं है जो हम अपनी वैकेशन वहां मनाएं, हमारे बच्चों को हमारा इतिहास पढ़ाएं, हम अपने स्थानों पर गर्व करें। और जरूरी है कि भारत में ही अपनी वैकेशन मनाएं। और वेडिंग के लिए भी मैं नहीं मानता हूं कि भारत से अधिक कोई अच्छी पवित्र जगह हो सकती है हमारे लिए। તો વડોદરામાં સરદાર ધામના લોકાર્પણ બાદ પીએમ મોદીનો ભવ્ય રોડ શો યોજાયો। વડોદરામાં વડાપ્રધાન મોદીનો આ ભવ્ય રોડ શો થયો। ગદા સર્કલથી જૂના એરપોર્ટ સુધી રોડ શોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું। ભવ્ય રોડ શો થયો હતો। 1.5 કિલોમીટર લાંબા રોડ શોમાં હજારો લોકો ઉમટી પડ્યા, જનમેદની ઉમટી પડી। વડાપ્રધાનના સ્વાગત માટે પશ્ચિમ બંગાળની વિશેષ થીમ રાખવામાં આવી। બંગાળના 1000 નાગરિકો પરંપરાગત વેશભૂષામાં દેખાયા હતા। રોડ શો દરમિયાન ઓપરેશન સિંદૂરની પણ झलक જોવા મળી। પશ્ચિમ બંગાળને વિશેષ થીમ રાખવામાં આવી કારણ કે પશ્ચિમ બંગાળમાં ભાજપની ઐતિહાસિક જીત થઈ। 200 કરતાં પણ વધુ સીટો પર ભાજપે જે ઐતિહાસિક જીત મેળવી છે તેને આવકારવા માટે આ બંગાળના નાગરિકો પણ પરંપરાગત વેશભૂષામાં દેખાયા હતા અને રોડ શો દરમિયાન જે ઓપરેશન સિંદૂર ભારતનું રહ્યું તેની ઝલક પણ જોવા મળી હતી। તો વડોદરામાં સરદાર ધામ સંકુલ 3નું પીએમ મોદીના હસ્તે લોકાર્પણ થયું। લોકાર્પણ કાર્યક્રમમાં મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે નિવેદન કર્યું છે। તેઓએ કહ્યું કે પીએમ મોદીના નેતૃત્વમાં બંગાળ હવે સોનાર બાંગ્લા બનશે। પંચાયતથી પાર્લામેન્ટ સુધી દરેક ક્ષેત્રે પાટીદાર સમાજે મહત્વનું યોગદાન આપ્યું છે। સમાજની સેવા પ્રવૃત્તિઓ દેશ અને રાજ્યમાં તમામ સમાજ માટે પ્રેરણારૂપ બની છે। સરદાર સાહેબ સૌને સાથે લઈને ચાલવાની સંસ્કૃતિ અને વારસો પાટીદાર સમાજને આપ્યો છે। આજનો આ સરદાર ધામ લોકાર્પણ અવસર જનશક્તિની તાકાતનું ઉત્તમ ઉદાહરણ છે। આદરણીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ પણ જલ શક્તિ, જનશક્તિ, જ્ઞાન શક્તિ, રક્ષા શક્તિ અને ઉર્જા શક્તિના શક્તિ પંચામૃતથી ગુજરાતના વૈશ્વિક વિકાસની ઇમારત રચી છે। સમાજ અને સંગઠનની શક્તિ શિક્ષણમાં કેવું અમૂલ પરિવર્તન લાવી શકે તે સરદાર ધામના આ સંકુલને જોઈને ખ્યાલ આવે। ગામડામાં વસતા દીકરા દીકરીઓના અભ્યાસની ચિંતા સમાજના મોભીઓ કરે। દીકરીઓ શહેરમાં જઈને ક્યાં રહેશે તેની વ્યવસ્થા કરે ત્યારે સમાજ નિર્માણમાંથી રાષ્ટ્ર નિર્માણના ધ્યેય સાથે સરદાર ધામ જેવા વિશાળ પ્રકલ્પો ઊભા થાય છે। આ માટે સરદાર ધામની સમગ્ર ટીમને પણ અભિનંદન।